Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all are doing great. Students, today we are going to learn about adverbs and their types. This lesson is simple, clear and packed with examples. ठीक है, तो let's start. So students, first of all, what is an adverb? ठीक है, तो adverb क्या है? हम इसकी definition देखेंगे. An adverb describes a verb. An adverb An adverb describes a verb. Okay, adjective. An adverb describes a verb, adjective or an other adverb. ठीक है, हमारे पास एक एडवर्ब जो होता है वो किसी भी नाउन, किसी भी वर्ब को एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब क्या करता है, डिस्क्राइब करता है. ठीक है बच्चों, सो हमारे पास कोई भी एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, लाइक व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपन्स. ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. जैसे शी स्पीक्स सॉफ्टली. फॉर एग्जांपल, she speaks softly. Okay, he arrived late. He arrived late. So in this sentence हमें पता लग रहा है कि हमारे पास एडवर्ब कौन सा है. speaks softly. So speaks is a verb and softly is a adverb. Okay, here he arrived late. Arrived is a verb and late is a adverb. ठीक है, तो हमारे पास एक एडवर्ब किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी भी दूसरे एडवर्ब को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है. ठीक है बच्चों, ये तो हम लोगों ने जान लिया. अब हम इसकी टाइप्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पे एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है, किस तरह डिस्क्राइब करता है. एडवर्ब्स ऑफ मैनर, टाइम, तो हमें हर चीज़ समझ आ जाएगी कि बेसिकली वो कैसे डिस्क्राइब करता है. So next students, we have types of adverb. The first type is adverb of manner. ठीक है, तो first type is adverb of manner. ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को समझ आएगी कि एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है. बच्चों, एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब ये होता है व्हाट इज मैनर, हाउ समथिंग हैपन्स. ठीक है, हाउ समथिंग हैपन्स. तो इसकी एग्जांपल हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. तो मैनर इज हाउ समथिंग हैपन्स. हाउ something happens. Okay, next we have examples. First example is she sings sweetly. So example is she sings sweetly. So example is she sings sweetly. Next example is he walked slowly. Next example is he walked slowly. So in this sentence we have adverb of manner, that is sweetly and slowly. तो बच्चे, जब भी आप, एक और चीज़ भी है, adverb of manner में हमेशा किसी भी verb के आगे अगर ly लग जाता है तो आप लोगों को जज कर लोगे आपको ये adverb of manner है. So adverb of manner is how something happens, like she sings sweetly and he walked slowly. ठीक है, बेसिकली बच्चों एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ समथिंग इज डन. ठीक है, ये चीज यहाँ पे डिस्क्राइब होती है. ओके बच्चों, नेक्स्ट टाइप वी हैव एडवर्ब ऑफ टाइम. ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम. व्हाट इज एडवर्ब ऑफ टाइम? दैट मीन्स व्हेन समथिंग हैपन्स. एडवर्ब ऑफ मैनर इज हाउ समथिंग हैपन्स एंड एडवर्ब ऑफ टाइम इज व्हेन समथिंग हैपन्स. सो एडवर्ब ऑफ टाइम इज व्हेन समथिंग हैपन. It tells us time. Okay, when
something happens. Okay, so for example, हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. जैसे I will call you tomorrow. I will call you tomorrow. So it tells us about time. Tomorrow, it's a time. So next example is they came early. So they came early. So that tells us about time. So tomorrow and early is the adverb of time. But your next type we have adverb of place. Okay, next type we have adverb of place. So basically where something happens, so it tells us about place, where. So adverb of place, so it tells us about where something happens. So where something happens. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियरली समझ आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल she looked everywhere. She looked everywhere. She looked everywhere. So everywhere is a adverb of place. Next is the kids are playing outside. The kids are playing outside. So tells us about place. So everywhere and outside is an adverb of place. So it tells us about where something happens. So बच्चों, fourth type we have adverb of frequency. So what is this? Adverb of frequency. बच्चों, adverb of frequency is how often something happens. ठीक है? How often something happens. So frequency is how often something happens. How often something happens. So हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए. So examples I always eat breakfast. I always eat breakfast. So always is a adverb of frequency. Okay, he rarely visits. He rarely visits. So rarely is the adverb of frequency. ठीक है बच्चे, तो हमारे पास adverb of frequency वो होते हैं how often something happens. So बच्चों, fifth type we have adverb of degree. So adverb of degree क्या होता है बच्चे? To what extent और how much. ठीक है, ये हमें डिग्री के बारे में बताता है, क्वांटिटी के बारे में बताता है, like how much. So what is degree? Adverb of degree. So what is adverb of degree? To what extent? To what extent? To what extent or how much? Or how much, like quantity. Okay, अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ओके, शी इज वेरी टायर्ड. शी इज वेरी टायर्ड. सो बच्चे, वेरी इज अ adverb of degree. Like she is very tired, कि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है, तो बहुत ज़्यादा is a quantity. It tells us about the extent or how much. ठीक है, quantity मतलब बता रहा है कि कितना कितना. ठीक है, she is very much tired. I almost missed the bus. I almost missed the bus. Okay, so almost is the adverb of degree.
सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एक क्विक रिकॉल किया है एडवर्ब्स, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स का एंड एडवर्ब्स का, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बहुत ही बेसिक तरीके से आप लोगों को समझाया ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। लाइक एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ईजी एग्जाम्पल्स ली हैं जिससे आप लोगों को ताकि समझ आ जाए। ठीक है, आप एडवर्ब ऑफ जैसे आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लोगों को हज़ारों हमारे पास एक टाइप के आगे फर्दर उसकी एग्जाम्पल्स हैं तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, हम लोगों ने इसका रिकैप भी आप लोगों देख लिया। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, टाइम क्या होता है, प्लेस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों इंशाल्लाह मैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ज़्यादा और अच्छी ग्रामर वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो में फिर से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।